Today we will discuss about the block diagram of different functions of computer. In previous class I draw this like pictures. Here is CPU and here is input unit and here was output unit. This type of picture I already drawn, but today I will do a little bit change on that type of picture. I will draw a block diagram of different functions of computer and we will modify the pictures as it. Here the CPU, and here I will draw the input unit, this one is the output unit, and here I will draw the storage unit. The storage unit is categorized into two types, that the primary memory and secondary memory. Today we will cover about this. Today we will cover the memory unit. Here is the CU, you already know that, the control unit, and here is the ALU, arithmetic and logic unit. I will draw this type of line and here also okay, next to this one. This is a solid line. Now I draw a dotted line like this, dotted line, and I will give this one. Next come here is a dotted line, or already you give this like this, or you can draw here, and one dotted line goes in between input and output. This line indicates the flow of control or control flow of different functions, different operation or functions. This line indicates the flow of control of different operations, and dotted line indicates the flow of data. It indicates the flow of data. The data is received by some temporary memory unit from the input unit, and this data is go to the CPU, and after doing some operations, after completion of that operations, CPU already further forwards its operation to the memory unit, and memory unit forwards the operation to the output unit. The dotted line indicates the flow of data, and this type of solid line indicates the flow of control of different operations. I already told you that control unit is the traffic police of the entire computer system. In CPU, control unit controls and coordinates all the units surrounding this
कंट्रोल यूनिट या चारि पाखरे जते भी कंट्रोल यूनिट अच्छे ऑल टाइप ऑफ पेरिफेरल यूनिट्स कंट्रोल यूनिट चारि पाखरे जते भी पेरिफेरल यूनिट अच्छी सब यूनिट गुडी को ए कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करछि एंड कंट्रोल करूछि सेतिपई सब देख एरो मार्क गुडिक कंट्रोल यूनिट रु आसुछि इनपुट यूनिट पाखकू फर्दर कंट्रोल यूनिट रु जाइछि आउटपुट यूनिट पाखकू एंड कंट्रोल यूनिट also controls this is storage unit, that is storage unit already or you can say it is the memory unit MU or SU you can say. previous class में discuss करते हैं MU and SU विषय. तो this dotted line indicates the flow of control, means control unit controls and coordinates all the units of the computer system, and this certain line and dotted line indicates the flow of data. Data गुडी को काम दउछन कीबोर्ड रे डाटा तळ हम कोनसी एंट्री करबा चाहू छी कंप्यूटर भीतर को ताले इनपुट यूनिट टू डाटा आसु गोटे टेम्पररी मेमोरी यूनिट पाखो देन मेमोरी यूनिट पाखु जाऊँगी कंट्रोल यूनिट पाखु कंट्रोल यूनिट ताको एलयू पाखु पठे पारे कंट्रोल यूनिट चेक्स वेदर द डाटा इज मैथमेटिकल और डाटा और नॉट जदि मैथमेटिकल डाटा हो देन कंट्रोल यूनिट फॉरवर्ड्स इट टू द एलयू एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशंस processing a CPU or control units forwards it to the memory unit and as per the requirement of the user memory unit forwards it to the input unit. This is the block diagram of different functions or different operations of computer system. तुम मैंने तुम नोट रे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करि परिबो. Okay, today we will discuss about the particularly this memory unit or storage unit. मु वर्तमान इरेज करछि. प्रीवियस पिक्चर तुम देख लो द स्टोरेज यूनिट इज ए टाइप थिला. स्टोरेज यूनिट क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट यूनिट्स. वन इज PM, दैट इज प्राइमरी मेमोरी and another is SM, this is secondary memory. PM stands for primary memory and SM stands for secondary memory. What's the difference between primary memory and secondary memory? Students, some memory is fixed into the computer system at the time of manufacturing the computer. That is primary memory, and you can say that primary memory is the inbuilt memory of the computer system. The primary memory को आमे main memory भी कहि परिबा. It is also called as main memory. Primary memory जपरि कि आमे जेतल कुछ भाषा शिखुछन when we learn a language at first we learn our mother language. आमे ओडिया कहउछन तो ओडिया इज द प्राइमरी लैंग्वेज एंड इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एक्सेट्रा दीज आर द सेकेंडरी लैंग्वेज. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सम मेमोरी इज फिक्स्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम and that is the primary memory. You can say it is the inbuilt memory. The primary memory is the main memory of the computer system, and the secondary memory you can buy it from the market. Secondary memory में example दे परिया pen drive, floppy disk, CD-ROM, DVD. These are the secondary memories. Here questions arise: why secondary memory? If primary memory is there, then why we need the secondary memory? The primary memory is you can say it is not sufficient to store what amount of data we want to store it. It cannot store the huge amount of data. The primary memory is not sufficient to meet our demands. If we want to store the large amount of data into the computer, then primary memory is limited for it. Primary memory is not sufficient. To extend the memory size, we need the secondary memory. Why we need the secondary memory? Now we need the secondary memory to extend the memory size of the computer. Computer memory size को हमें extend करिया पाए secondary memory नेले. The secondary memory हमें example नहीं परिया, that is pen drive or hard disk. You can say hard disk. This is
secondary memory. Secondary memory also called auxiliary memory. Auxiliary memory. Primary memory की हम main memory कही पार्छन. Primary memory is known as the main memory, and secondary memory is also called as the auxiliary memory, or you can say the external memory. This is external memory. External or extended, you can say extended memory. Extended memory. Auxiliary memory, extended memory, secondary memory, all are same, and these are bought from the market. You can buy this type of memory from the market to expand, to extend the size of the memory of computer system. This is secondary memory. Secondary memory further ताको divide कराई गोटे magnetic आ गोटे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी मु केबे पुणी नेक्स्ट क्लास को सेकेंडरी मेमोरी विषय पढ़ेबा. हाँ, सेकेंडरी मेमोरी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और इंडेक्स एक्सेस मेमोरी एंड सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू रे हम ताको पढ़ेबा सेकेंडरी मेमोरी विषय. वर्तमान आम प्राइमरी मेमोरी को क्लासिफाई मु करूची. द प्राइमरी मेमोरी is classified into two types, that is basically two types. One is RAM, another is ROM. RAM and ROM. ये ROM जगह आम आउ किसी देखिपर EEPROM PROM नहीं पारिबा. ROM is one type of memory, EEPROM is one type of memory. That comes under all ROM categories. A ROM, PROM, EEPROM, this comes under this ROM category, and a RAM is a random access memory. Classify korchi. RAM stands for random access memory, and a ROM stands for read only memory. This is random access memory. Access memory. And this one is read only memory. Read only memory. Random access memory. So why name is the random, and what do you mean by access, and what is the memory? So memory in computing, memory is a physical device which is used to store the data, and particularly from primary memory case, the memory is also known as SOM, that is semiconductor of memory, or semiconductor memory आम कही पारिया. ताकू SOM देता मेमोरी यूनिट ऊपर आउ थे मु पढ़ेबी तार फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे. सेगुड़ा आम देखा केवल सिलिकॉन चिप गुड़ी आम तापर इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप ऊपर किसी सेमीकंडक्टर रखा हो, किसी ट्रांजिस्टर्स रखा हो जोटा कि मेमोरी तैयारी हो. तो आम पर्टिकुलरली आज डेट उपर आम पढ़ा जे प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन कौन, रीड ओनली मेमोरी कौन कौन. रैंडम एक्सेस मेमोरी, accessing अर्थ हूँ रिट्राइविंग द डाटा और रीडिंग द डाटा और फैचिंग द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. दैट द accessing authorization. It means that the person has the permission to read some data or to fetch or retrieve the data from the database. That is the accessing. Data accessing means reading the data or using the data accessing. Random accessing memory, the why name is the random access memory. The RAM is categorized into different locations. For example, there are different locations. All the RAM, the memory is deep fragmented into different locations. Location address भी रही different cell बा different location address उड़ी अच्छी. तो मैं जेकोन से location लो data access करो ना, a data accessing time is same. If you want to access the data as per your
requirement or as per your wanted तम इच्छा अनुसार हाँ as per your choice तुम जेकोसी लोकेशन लो डाटा access करूच accessing time is same in case of RAM. That's why its name is random access memory. Randomly you can access the data from any locations and it will take the same time. Suppose you want to access the data from these locations and you want to access the data also these locations. So accessing time from that location and this location is same. But randomly you can access the data from any locations of this memory. That's why its name is random access memory. Accessing time is same when you access the data from different locations of the RAM. That's why its name is random access memory. And from its name also read only memory, you already understand that you can do only the read operations. You cannot do any type of write operations. The read only memory, the data which are stored in RAM is not writable, means you cannot do any type of changes or any type of deletion operations on the data which are stored in RAM. Basically RAM is volatile. Its nature is volatile and this nature is non-volatile. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन volatile and non-volatile? मु किछि टर्म तो मु बुझौछि तापर पूरा डिफरेंशिएट करमी RAM एंड RAM भितर. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन volatile and non-volatile? Volatile data means changeable, editable. You can do any type of changes on existing data, or changeable data, updatable data or editable data is known as volatile nature. A memory is volatile, it means that the data stored in RAM can be changeable. You can change, you can modify, you can remove. You can do 3 operations: read operations, erase operation, and modification operation. Modify. You can do 3 operations on the data which are stored in RAM. Read operations, you only access the data, you cannot do any type of changes. Erase operation means you can remove or delete the data. And modify operations, you can change the data or update the data which are stored inside the RAM. But here you can do only read operation. That is read operation. तो volatile कहूँ जे the data which are changeable, the changeable data गुड़िको RAM भितर आमे रखी परिया. And non-volatile, the data which are stored in RAM is not changeable. It is fixed, it is permanent. You cannot do any type of changes on the data which are inside the RAM. The RAM in non-volatile nature and RAM is volatile nature. एको आउ टिके मु जदि एक्सप्लेन करूची, आउ टिके क्लैरिफाई करूची, then the data inside the RAM is present till power supply is present. जेते पर्यंत पावर सप्लाई अछि सेते पर्यंत RAM रे डाटा थाई पारे. And the data is present in the RAM even there is no power supply. जेते बले पावर सप्लाई अच्छी तो डाटा अच्छी, जेते पावर सप्लाई भी नहीं से क्षेत्र भी आमे डाटा गुड़िक RAM भितर थिबो, इरेज हबो नहीं. तो here the data inside the RAM is present till the power supply is present. Here data is remains there even the power supply is not present. This is the volatile and non-volatile nature को indicate करूँ. Next, RAM large in size. Your size large. You can store much more data as compared to RAM. In case of RAM, the size is larger.
and it can store more data as compared to RAM, and its size is less. From cost point of view, this is high cost. It is very costly, but it is cheap. Cost point of view, RAM it is सस्ता पाइबा, RAM is cheap and it is high in cost. Working point of view रे, आमे working point of view रे कौन होचे? मु differentiate करी लास्ट को differentiate करी पूरा लिखी भी. Working point of view रे, the data inside the RAM is directly fetched by, it is directly accessed by the CPU. Accessed by the CPU. RAM भितर जो डाटा होची, data which are inside the RAM is directly accessed by the CPU to do some functions or some operations. For particular operations, when CPU needs some data, then CPU can access the data directly from the RAM. But CPU cannot directly access the data from the RAM. RAM रो CPU cannot access the data directly. कौन हुए एक क्षेत्र रे? Now RAM data is at first RAM data is copied into the RAM. RAM रो data प्रथमे copy हबो RAM को, then RAM रो data जीवो कोठी के CPU को. But here direct RAM रो data में CPU को नहीं परिवार. CPU can access the data directly from the RAM, but here CPU cannot access the data directly. At first, all the data which are required by the CPU are copied into the RAM, then CPU can access the data from the RAM. This is accessing point of view. आमे differentiate करछंदी RAM and RAM को. आमे work point of view रे differentiate करिवा. ये डाटा गुड़िक साधारणतः यूज होची रम रे डाटा गुड़िक बूटस्ट्रैप रे यूज करा जाय पारे. बूटस्ट्रैप कंप्यूटर ता बूटअप होची सेता में ये डाटा गुड़िक यूज ही परियो. एठी हमें डाटा कौन हुए ना ऑपरेटिंग सिस्टम ताको स्टोर करी रखिबा हार्ड डिस्क रे बा हार्ड ड्राइव रे. हार्ड ड्राइव रे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करी रखिले जरे जतले हमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को प्ले करूचंती बा ऑन स्टार्ट करूचंती, देन हार्ड ड्राइव रो डाटा आसीबो RAM पाखु, देन RAM रो डाटा जीवो CPU पाखु, तापर जे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करि परिया. तो एई भली काम गुड़िक एई पूरा डाटा गुड़िक आम RAM रे ही यूज करा होछि. तो गोटे एग्जांपल मुझे दूसरी द ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इनसाइड द ये आम कहीपर इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम आम स्टोर्ड है कौटी हार्ड ड्राइव रे. हार्ड ड्राइव रो डाटा आसेस होची RAM को एंड RAM रो डाटा आसेस होची CPU को. देन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर स्टोर्ड इन द RAM रे आमे जदियो सिस्टम सॉफ्टवेयर आमे एठी बायोस को यूज स्टोर करि परिबा. बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर बायोस कि एई भली सॉफ्टवेयर गुडी को आमे RAM रे जेता रखुचंदी किंबा गोटे सॉफ्टवेयर को जेता आमे कंप्यूटर को ऑन करचंदी. व्हेन यू स्टार्ट ए कंप्यूटर एट दैट टाइम सम बूटिंग इज गोइंग ऑन देयर एंड टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर सम सॉफ्टवेयर्स आर नीडेड. दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्टोर्स इन RAM. बट जदियो ये भी गोटे प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे प्रकार सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट ऑपरेटिंग सिस्टम केस रे कौन होची ना ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स समटाइम इट नीड्स टू बी एडिटेड. अर्थात समटाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एडिटेबल और अपडेटेबल. सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सम यूजर्स कैन अपडेट और मॉडिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट. आवश्यकता स्थले ऑपरेटिंग सिस्टम को केताले आमे एरर फ्री करि परिया किबा किछि एडिट करि परिया. जदि ऑपरेटिंग सिस्टम को आमे RAM भीतर रखुचंदी आमे ए जगह एडिटिंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल.
तो रम डाटा गुड़िक जहाँ रखाऊँ से आम एडिट करें ना तेणु ऑपरेटिंग सिस्टम जदि एडिटेबल आवश्यक स्थल में एरर फ्री करा पड़ुची से समय ऑपरेटिंग सिस्टम को आम हार्ड ड्राइव रखी दौर हार्ड ड्राइव रू आसेस हो राम को देन राम रू आसेस हो सीपीयू को तापर ऑपरेटिंग सिस्टम आम स्टोर रन कर प्रीवियस क्लास रे गोटे पिला से बड़ा क्वेश्चन पचार जे ऑपरेटिंग सिस्टम को आम कौ जगह रखा सर राम रखा ना रम रखा मुझे कहती हार्ड ड्राइव भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखिपर समटाइम्स आम राम रे भी स्टोर करें बट एक्जाक्ट मेकानिज्म इज लाइक दिस सीपीयू can direct access the data from the RAM but here CPU cannot direct the access from RAM and RAM आम ये किसी सॉफ्टवेयर को रखा सिस्टम सॉफ्टवेयर को रखा जोटा बूटस्ट्रैप बा बायोस टाइप किसी प्रोग्राम को रखा सेगुड़ा आम से सॉफ्टवेयर गुड़ी आम कौन कहते छुआ ताको आम कहते फार्मवेयर आम जानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फार्मवेयर कौन कौन फार्मवेयर इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक दिस बायोस व्हिच आर स्टोर्ड इनसाइड द रम एंड व्हिच आर यूज्ड टू स्टार्ट अप ए कंप्यूटर बुटिंग पर्पज रे बुटिंग केस रे आम जो सॉफ्टवेयर गुड़ रन होती ना से सॉफ्टवेयर गुड़ी आम फार्मवेयर बोली कहते ये फार्मवेयर सॉफ्टवेयर गुड़िक जेनेराली आम रम रे स्टोर कर रखुँच किंतु जेनेराली ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स गुड़ी को आम राम रे स्टोर कर रखुँच आम हार्ड ड्राइव रे स्टोर कर रखुँच तो वर्क फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू रे यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू रे मु डिफरेंस तुमको देखौची राम एंड रम भितर देन स्टूडेंट्स RAM is also divided into two types गोटे SRAM आउ गोटे DRAM तुमको ये नोट मु प्रोवाइड करी तेन वरी हम ना वीडियो देखी तुम नोट भी किसी करने ट्राए कर ना मु PDF फाइल प्रोवाइड कर तो RAM is also divided into SRAM and DRAM that is static RAM S for static and D for dynamic RAM okay मु बर्तन डिफरेंशिएट करुच्ची कॉलम वाइज रम एंड राम भितर दैट इज राम दिस रम वन इट स्टैंड्स फॉर रैंडम जहाँ तुम बुझे से लिखि दूची तो नोट करने इजी हम रैंडम एक्सेस मेमोरी इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी सेकंड पॉइंट RAM is in volatile nature and here it is non volatile nature ऑलरेडी बुझे सारी गोटा volatile गोटे non volatile next data in RAM is present till power supply is present. Here data in RAM is remains there even if power supply is not present. Four, CPU can access the data from RAM directly. But here in this case, at first
data are copied into RAM, then CPU can access the data from RAM. ओके, ये 4टा पॉइंट गला. नेक्स्ट पॉइंट 5, RAM stores some application software, some softwares like some application software, you can say applications software, but you can say RAM stores some softwares, RAM stores some programs which are editable. In this case, it stores programs like firmware. This is the 5 difference between RAM and ROM. Further, RAM is fast, here RAM is slow, is comparably slow. It is larger in size. It is smaller in size. Eight, its cost is high. It is cheap. Students, you took this 8 difference between RAM and ROM. Next, we will discuss about the capacity of a memory. What do you mean by the memory capacity? Memory, what is memory? In computing, memory is a physical device. Memory refers a physical device to store the data. In computing, memory refers a physical device to store the data. That device can be built up of some oxide metal semiconductor, transistors, which are on silicon integrated chip. So memory capacity jeta capacity of a memory, capacity of
मेमोरी कहले यहाँ बुझुं गोटे फिजिकल डिवाइस जी डाटा स्टोर करछि कैपेसिटी ऑफ मेमोरी जो आम कहते कौन बुझुं कैपेसिटी ऑफ मेमोरी it means that how many bytes can be stored inside the memory. Capacity of memory, it means how many bytes can be stored inside the memory. One new term comes here and that is bytes. What is bytes? Bytes को बुझिया पूर्व आमे बुझिबा what is bit. Bit stands for bit. Bit stands for binary digit. Binary digit. Bit stands for binary digit. Binary, what is binary? Binary means it refers to, by means to, 0 or 1. Binary refers 0, 1, on, off, yes, no. These are the binary. Binary means it refers to situations, on, off, yes, no, 0, 1, north, south. There are two poles of a magnet, north pole, south pole. The binary refers to, that is 0 and 1. The 0 is a bit and 1 is also a bit. It is a 1 bit and it is also a bit. The computer can understand only the binary language. What is binary language? The language which is developed on, or the language which is developed with 2 digits, that is 0 and 1. How many digits are there? Digits are from 0 to 9. There are 10 digits. 10 ପରେ ଯୋଉଠି ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି number. This is the difference between digits and numbers. 10 ପରେ ଯୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ number କହୁଛନ୍ତି 9 ପରେ 10, 11, 12, these are the numbers. And digits 0 to 9. 0 to 9 refers to decimal. And 0 to 1 refers to binary. 0 to 1 आमे ताळ कहउछन्ती आमे binary विषय कहउछन्ती 0 to 9 digit को जता आमे इंटीग्रेट करछन्ती we are talking about the decimal. ए बाबद रे आमे very beginning आमे जानछन्ती प्रथम क्लास रे आमे एगुडा जानछन्ती decimal language ऊपर. The binary language is developed, or binary language is based on 2 digits, that's 0 and 1. 0 is known as 0 is a bit and 1 is also a bit. This is bit. And what is byte? Byte is the collection of, specially अनेक केस रे चेंज होची किंतु जनरली commonly byte is the collection of 8 bits. Byte is the collection of 8 bits. Most of the case रे किंतु it is not fixed, it's constant वे. इमिति टेक्नोलॉजी डेवलप होची जे बाइट रो साइज भी चेंज होची किंतु 85% केसेस रे आमे देखुछंती 1 byte is equal to 8 bits. It has most of the case रे. It is not fixed, but most of the case रे 1 byte equal to 8 bits. तेणु आम ये बाइट आ बिट ये को यार ऊपर डिपेंड करके आम देखुं कैपेसिटी ऑफ मेमोरी की जजमेंट कर तो कैपेसिटी ऑफ मेमोरी आम कहते इट मीन्स हाउ मेनी बाइट्स कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी. तो आम डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट साइज रो मेमोरी जान थो आम केबी बोली कहते केबी दैट द किलोबाइट केबी
1 kb equal to 2 to the power 10 bytes. 2 to the power 10 bytes means 1024 bytes. Then 1 kb by kb stands for kilobyte, and 1 kb equal to 2 to the power 10 bytes, that is 1024 bytes. And MB stands for megabyte, and 1 megabyte equal to 2 to the power 10 kb. 2 to the power 10 kb equal to 1048576 bytes. Next, gigabyte, GB stands for gigabyte. 1 gigabyte, 1 GB equal to 2 to the power 10 MB, that is 1073741824 bytes. नोट कर नब kb, that is kilobyte. 1 kb equal to 2 to the power 10 bytes equal to 10 or 1024 bytes. 1024 bytes means into 8 जति आसो से बिट. यार ऊपर विशेष कर बाइट ऊपर बेस करुच्ची द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, एंड MB जोटा मेगाबाइट कहूँ दैट 2 to the power 10 kb एंड 104856. पिले बर्तमान क्वेश्चन आराइज हो सर ये ना कहीं किलो मेगा गिगा या कहीं दि जाऊँगी. साधारणतः आम जो किलो कथा चिंता कर लिभाऊे ए तेणु किलो को आम रिफर कर 1000 सहित, दैट इज किलो. तेणु जो आम मेगा कथा कहते दैट इज मेगा से 10 lakhs विषय आलोचना कर 10 lakhs. एंड जो गिगा विषय आलोचना कर गिगा से 100 करोड़. 100 करोड़. तेणु आम जेनराली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आम यहाँ लगुच 1 मिलियन. 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs. एंड गिगाटा कहते 1 बिलियन. 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़. तुम देख ये 1024 bytes. 1024 bytes is nearly equal to 1000. That's why its name is kilobyte. And here 10 lakhs 48,576 near about to 10 lakhs. That's why it's 1 million, and it refers to the name megabyte. And here 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 107 crore 37 lakhs 41,824. Here is nearly equal about the 1 billion, that's 100 crore. That's why its name is giga. तेणु कहीं आम किलोबाइट एंड मेगाबाइट एंड गिगाबाइट ये नंबर गुड़ी को कहले बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू दिस नंबर. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लाइक दिस. So depends on the capacity, depends on the how many bytes can store or how many bytes can be how many bytes can be restrained on the memory. That depends on the capacity of the memory. Clear? जे पढ़े तो नेक्स्ट क्लास को आम आसिले मेमोरी यूनिट आउ गोटे पार्ट रहा दैट द रजिस्टर विषय में आलोचना करिया. आज पे एति थाओ. गुड बाय.